ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ LLB ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଲା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଲ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଷ୍ଟାଟସ୍, इंटरनेशनल ट्रेटिस। 3 नंबर हूँ आमर हाउ डज एनवायरमेंट ला बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। एनवायरमेंट लाटा किपरि बैलेंस करी अछि डेवलपमेंट को आउ कंजर्वेशन माने जोड़ा संरक्षण उपर। 4 नंबर हूँ आमर व्हाट इज पॉल्यूटर्स सेस प्रिंसिपल एंड हाउ इज इट अप्लाइड इन एनवायरमेंटल ला। 5 नंबर हूँ आमर explain the concept of sustained development in the context of environmental law। environmental law उपरे context था कि हमरो sustainable development कौन ता concept कौन सेटा बुझे को अछि। तापरे legal framework उपरे और legal framework policies उपरे क्वेश्चन नोड को अछि। 1 नंबर हो हमरो what are key international treaties and conventions related to environmental protection and convention related to environmental protection जेने Kyoto Protocol, Paris Agreement, Stockholm Declaration। What is the role of the United Nations in the development of international environment law? Discuss the main provisions of the Environmental Protection Act 1986। 9 नंबर हो हमरो what are the key features of the Water Prevention and Control Pollution Act 1974 and their prevention and control of pollution act 1981। how does the Forest Conservation Act 1980 regulate the use of forest land? जुडिशियल इंटरवेंशन ऊपर कौन क्वेश्चन अच्छी। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जुरिस प्रोविडेंस। डिस्कस लैंडमार्क एनवायरमेंटल लॉ टेक्स इन योर कंट्री। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भेलो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एटा होचा हमर केस ला गुडी को एनवायरमेंट लॉ रो। हाउ डू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PILS contribution to environmental protection। constitutional perspectives, what are the constitutional provisions related to the environment? article 21, article 48A, article 51A G in India। एटा थला हमरो किछि क्वेश्चन हमरो LLB पर आउ किछि क्वेश्चन अछि हमरो डिस्कशन करिया बतन। What do you mean by environment pollution? Also explain its causes and effects. Discuss the meaning and nature of environment law. What are its global effects? Explain the composition, powers and functions of the central board under the Air Prevention Control Pollution Act 1981। Discuss the salient features of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। Discuss the sources and effects of noise pollution। Discuss the procedure for the declaration of sanctuaries, national park and closed areas under the Wildlife Protection Act 1972। हमर वाइल्ड प्रोटेक्शन के होइतला 1972 एक्ट हेतिला सेटा से ऊपर हमर सेंचुरीज नेशनल पार्क तार किसी रूल और रेगुलेशन अछि सेटा ऊपर क्वेश्चन है सेटा। 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन in protection of environment। discuss the aims and projection of the national environment। discuss the aims and objects of the National Environmental Tribunal Act 1995। discuss the general powers of the central government under the Environment Protection Act 1986। important question in protecting and improving the quality of environment।
तो 8 नंबर आम टिक मारिबा इम्पोर्टेंट हिसाब से। व्हाट द ड्यूटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड? मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमसी मेहता, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, केस लॉ अच्छे एटा। व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन एज अ शॉर्ट नोट रे अच्छी क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर? हाउ फार द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 achieved its objectives? What are the main causes of climate change? What do you understand by sustainable development? Write a note on establishment national park and sanctuaries. Describe the basic features of Wildlife Protection Act 1972. How far this law is able to protect wildlife animals? एटा किसी क्वेश्चन थिला। तापर आउ किसी क्वेश्चन अच्छे आमर LLB एग्जाम रो फर्स्ट सेमेस्टर रे आमर लॉ ऑफ एनवायरनमेंट जो लॉ अच्छी तार किसी क्वेश्चन अच्छी एग्जाम बहुत हेल्प करिवो। 15 नंबर हाउ हैज द जुडिशियरी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ? एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर एंड रेगुलेटिंग बॉडीज ऊपर व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉस? हाउ डू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट assessment regulates projects and industrial activities? Challenge and reforms. What are the major challenges in enforcing environment laws? Discuss the need for environment law reforms in light of climate change and biodiversity laws. How can legal system promotes renewable energy and reduces carbon emission? Global and regional perspectives. Compare environmental law in your country with another country. What are the roles of regional bodies? European Union, African Union, environment governance, polluter pay principle, public trust doctrine, current environment problems, fundamental duties concerning environmental under constitution of India. Environment is everything which is not me. Quotation explain करियो कहूँ। Air polluter under the Air Prevention Control of Pollution Act 1981. Explain the Environmental Protection Act. Ancient Indian philosophy relating to environment protection. Explain the scope of section 133 of Code of Criminal Procedure as a tool for combating environment pollution. Discuss the constitution of State Board under Water Prevention Control Pollution Act 1974. आउ किसी क्वेश्चन अच्छी लास्ट पार्ट एटा आमर इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ए फंडामेंटल रिजिड? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन्स एंड केस लॉ. व्हाट आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981? एक्सप्लेन व्हाट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस? एक्सप्लेन विथ डिसाइडेड केस. केस लॉ पर अच्छी केस लॉ पर अच्छी इंपोर्टेंट एटा. व्हाट आर द प्रोविजन्स रिगार्डिंग लायबिलिटी एंड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981? डिस्कस ब्रीफली एटा इंपोर्टेंट अच्छी. व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट? व्हाट लेजिस्लेटिव स्टेप्स हैव बीन टेकन to protect the forest? 8th is the summit was a great milestone on the path of harmonizing the causes of environment and development. Explain in the light of provision of Rio Declaration. Last number short note jaga. Hazardous waste कौन, power of state board, environment कौन, greenhouse effect, ozone depletion, global warming, reserve forest, climate change. एति आमर क्वेश्चन थिला. ओवरऑल आमर सब क्वेश्चन ताकि आमर LLB ऊपर अच्छी. LLB फास्ट सेमिस्टर एग्जाम पे ये सब क्वेश्चन गुड़िक आवश्यक अच्छी. एटा क्वेश्चन ऑफ सम एनवायरमेंटल लॉ अच्छी. तो ये क्वेश्चन जगह कलेक्ट करी अपलोड कराई. थैंक यू वेरी मच.